ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पता नः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम। What is big and small in this world depends on where we are standing and seeing. Supposing anybody asks that this particular building is big or small, so the answer should be it is not an absolute answer. Where from you are looking, that depends it is small or big. Howsoever big building may be, if you see from the airplane, then it will become very small. And if you see from the bottom, same thing will appear very big. Similarly, the definitions of the world are relative and they are not absolute. If you say he has a good time or bad time, you have to references compared to that time. I have a good time. Compared to that another time, I may have a bad time. So everything, worldly relations, worldly definitions are relative definitions. And therefore, anything you define from the worldly angle will always change as per the time, space and situation. So which angle you are seeing? We had been seeing. So one was Jagat Drishti. So Jagat Drishti, Dhan is very big because Jagat Drishti is there. Dhan by itself is not big, but Jagat Drishtya from the level of Jagat Dhan. But Dharm Drishti is bigger than Jagat Drishti because what Dhan we get is only from Dharm only. Dhan somebody has, it is indicating of that he has done sufficient dharma and upasana. Then only Dhan will come. So the Dharm Drishti is bigger than the Jagat Drishti. And the Dharm, the giver of fruit of action, is the Ishwar. So Ishwar Drishti is bigger than the Dharm Drishti. And to make that God happy, his Atma Santosh Drishti is bigger than Ishwar Drishti.
Because that satisfaction you are getting from dhan is already there, the person who has satisfied the Ishwar. And Atma Drishti is bigger than the Ishwar Drishti also, because Ishwar is Idamta, Atma Drishti does not have Idamta. So we have to see, yesterday you saw, this is 45th verse, that something becomes bigger and smaller depending on the money only. In the world. In the world. Somebody asks, I want to go to, say, England. Is it easy or difficult? If money is there, it's very easy. It's not that difficult. Simple answer is there. Or I want to build a house of 4 stories in Juhu Beach. It is easy or difficult, depends on how much money you have. It's easy. I want to go for very big treatment, best doctor. Easy. If you have money, it's easy. If it's not there, then it's difficult. So in this world, easiness and difficulty are relative world depending on the money, etc. That was mentioned. Yesterday we saw that example. That the rice, the barley which was there, small barley is very big when you are poor, and whole earth is also small when you are very rich. तो दिस ये माया का है खेल, पता नहीं कोई चीज़ कहाँ बड़ी हो जाए, कहाँ छोटी हो जाए, where it will become small, where it will become big. So this is the point, that it is not too much worth it, because you don't know what will make it smaller, what will make it bigger. One day our achievement becomes bigger, one day achievements become smaller. So this is the third point of dhan. First point was dhan was, if dhan is not there, then jati, kul, gotra, etc. are useless. Jagat drishti, I am repeating it. If dhan is there, then everything is very good about you. And third is that if dhan is there, then you have a power to get things done. You can make it happen, you can give and you can take faster. Everything becomes easier in the worldly. I'm not saying it will happen, but more things will become easy for you. And then because he has money, therefore this. Not that from money you can get love, from money you can get peace of mind. That is not there. But external panch bhutatmak things will become easier for you to get. Well, it comes to emotions and knowledge and faith, that has nothing to do with the money. But money can bring out something regarding the 5 element. Faster for you if you have money. If you don't have, then you don't. But don't forget, it has come from dharma only. And dharma has come from Ishwar only. So this was seen in the 45th verse. Now let us see 46th verse. Lot of verses are there. Time is now going away. Rajan dudukshasi yadi. Rajan dudukshasi yadi kshitidhenu metam. तेनाद्यवत्समिव लोकममुं पुषाण. तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे. नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः. He is addressing to the king here. He is saying, if you want that earth should give you lot of crops, so you also you nourish the people around. When devan bhavayatanena te deva bhavayanti yaha parasparam bhavayanta shreya paramavapsyata ishtan bhogan hivo devaha दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेनेव सह. So if I am disturbing the system, so environment also will disturb us. If some king has been irreligious or not religious,
So the earth, the land, everything will become full of problems because I have disturbed and created lot of pain somewhere. So this is Mother Nature or Mother Earth. So our Prakriti also will react in some way or the other, and reaction of the Prakriti is very uncontrollable. So तस्मिश्च सम्यग अनिशम परिपोष्यमाणे नाना फलहि फलति कल्पलतेव भूमि. कल्पलता की तरह भूमि फलती है अगर हम प्रजा का आपने पालन किया हो. If you have nourished the people there, then the earth will be full of crops, full of nice rains, full of fruits. If a person is, Gurudev used to say, the nature is your echo. If the nature of the community is not good at a certain place or a certain time, then the nature of the Prakriti in front of that, she also withdraws what she has inside the earth in the form of famine, not family, famine, or in the form of terrible rain, in the form of storm, in the form of tornado, etc. It has withdrawn because I am not giving, so Prakriti stops giving. About in Ram Raj, it was said if somebody was asking like that, so they were showering whatever they wanted because this world is full of gems, Vasundhara, Vasundharayati. It has lot of gold, gems, and lot of things you have. But if I have not offered, so that thing will also not offer to me. And therefore, if you see in Australia, I think 75% Australia is barren. 70, more than that, I think. 70 कितना कुछ ऐसे ही है. So whole Australia is barren, only certain coastline are there, where some cities are there. Middle East was barren once upon a time. Still it is barren, certain places only some countries are there. If you go to Europe, most of the Europe is very cold. Poland, Germany, France, it's extremely cold. Switzerland, so much cold that you cannot go out, you cannot function. Why nature is so harsh? Certain places in America are very cold. That place near Canada in America, that is also cold. क्या नाम है उस सिटी का? That state, बॉर्डर में नहीं, अमेरिका एंड कनाडा टूवर्ड दिस साइड. क्या है स्टेट का बोल रहे हैं, वहाँ बहुत कोल्ड है. बिकॉज अब हियर इन इंडिया इट इज नॉट वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट. So you can still function, you can go out, you can still work. Delhi is 3, 4, 5 degree at the most. That's very cold, very cold. Supposing that temperature is there. So here seasons are there. Therefore all kinds of crops came, all kind of rivers came, and every part had river. Every part had sunshine, every part had, what is it called, nice winter, nice summer, autumn. It was a reflection that the people were offering to the God, expressing in form of nature. Whether it was argya giving to Surya Bhagwan, or worshipping the Prithvi Devata, or worshipping Vayu Devata, or worshipping Agni Devata. Therefore, Devo Upasana was very powerful here. देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्ति वा. And therefore what happened, one very good result was that your standard of living was not very high because things were easily available.
And still, India is much cheaper than other countries. Whether कल वो आए थे ना, कौन पूछ रहा था कि medically house in South Africa? Huh? So South Africa is also very expensive medically. And what to say of America? अमेरिका तो बहुत ही एक्सपेंसिव है. क्या बोलते हैं उसको? मेडिकल एड इज देयर. एवरीबडी हैज मेडिकल एड. हाँ, इंश्योरेंस बोले, बट दैट टू कैन कवर अ लिमिटेड अमाउंट. उन्होंने कहा कि भाई यहीं आपको एक साथ एक ही जगह का मेडिकल एड देगा एक बार में. इट कान गिव एट टू प्लेसेस इफ यू आर हर्ट. ये कोई बात है? तुम वो पागलपन है. बोले आपके यहाँ चोट लगी तो वहाँ कैसे लग गई? सो अब हियर यू सी लॉट ऑफ luxurious crops are there, fruits are there. Every house had cows and orchard. The result of this was that you don't have to worry to live and earn. You can live. And the principle was said, Bhai Matra Deva Bhava, Pitra Deva Bhava, Tithi Deva Bhava. And give 1/5 of your, 1/10 of your earning to the people around. सेवा करो. ये हम लोग के बारे में बहुत बात डाली गई. You serve. ये थोड़ी ना बोला गया कि there is an old age home. Send the father, mother to the old age home. यहाँ श्रवण कुमार के बारे में बताया गया. यहाँ पे मतलब उन्हीं को ग्लोरीफाई किया. भरत जी के बारे में बताया गया. So result was that the Indian psyche is like that I should serve and give the people around, if I have that. Therefore, the outer Prithvi, Jal, itni river aa gaya. In whole Middle East there is no river. Imagine there is no river there. And here Ganga cha Yamuni cha Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Guru. इतनी रिवर्स है, इतना रेन्स है. सो जल, पृथ्वी अनुग्रह इज देयर, जल अनुग्रह इज देयर, अग्नि अनुग्रह इज देयर, वायु अनुग्रह इज देयर, आकाश अनुग्रह इज देयर. सो दैट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट. That it gave a time to the people to think of something more than the body. And therefore, because food was easily available, in Kumbh Mela, thousands of people are eating without anything. Various places, various ashrams have opened their place for cooking. Not for eating. And not only in Kumbh Mela, many of the cities, if I gave, वहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ खाना आराम से फ्री मिलता है. Most of the cities in India, I don't know in America you get free food or not. It is not the culture to give free. Nobody is available to give free. लेकिन यहाँ बोला गया अन्नदान महादान. पता लगा poor people are there, somebody is distributing blanket in Kumbh Mela. So because this culture was put, the result was that this was a fittest ground for thinkers and sannyasis to grow, because they don't have to earn. And they got sufficient time to meditate, contemplate, and bring the butter of the scriptures and churn it and bring out the gems that was hidden in it and write so many things. 50 commentaries of Brahma Sutra are available only in Sanskrit. 900 commentaries of Bhagavad Gita is there.
The person who is writing, he must not be working somewhere. To write such, he should be day and night. That means food must be given by society. That means he must be living in some place what was given by the people around. So this was, therefore, so much great scholars and saints and so many geniuses came in our country. And the result was, the cause was, because the relation with the outer five elements, which are the giver, was very good here. Even the relation with the animals was very good. Go Puja was here. Nag Puja was here. Nag Panchami was celebrated. Kukke Subramanyam is for Nag Devta. वहाँ पे नाग पूजा है. फिर what to say of, even the dog is worshipped. A savari of, and in Nepal. आउटर वर्ल्ड से इन्होंने काफी अच्छा सिंक्रोनी म्यूजिक बना के रखा. बहुत कॉपरेट किया बाहर के वर्ल्ड ने अंदर आपको जाने के लिए. इट गेव यू अ इजी एंड पास दैट यू कैन गो इनसाइड यू. आई विल नॉट डिस्टर्ब यू. आई विल ब्रिंग अ स्टॉर्म, or I will not give you food, or I will not give you nice person around you, or I will not give you nice son or daughter. So everything was facilitating the communication with the God. This outer five elements, what we call nature, should be a facilitator for communication with the Lord. And that happened because they were serving, they were giving, they were living a dharmic life. Dharmo rakshati rakshita. Therefore in Bhagavad it comes, Raja Vena had come. And Vena was a terrible king. This comes in 4th canto. So, and slowly the earth had famine after the Vena's reigns. And after that, Vena's son was Prithu. So Prithu came and there was nothing to eat. So Prithu invoked the Prithvi in the form of a cow, if you remember, and chased the cow and wanted to shoot her. Prithvi said, you should not do like that. I had hidden all the crops because people were adharmic. And therefore I have hidden everything here. तो हम लोग जो देंगे फिर हमको वैसा ही मिलेगा. ठीक है. एक ग्राउंड होता है वेयर यू कैन रिमेंबर गॉड, वेयर यू कैन प्रैक्टिस संन्यास, वेयर यू कैन प्रैक्टिस ब्रह्मचर्य, वेयर यू कैन हैव गुरुकुल सिस्टम, वेयर यू कैन हैव वानप्रस्थाश्रम, where you can have, देखो कितना है. If you go to Karnataka, every temple they feed everybody. And I went to Sringeri. The Sringeri also, so much facilities are there. In the Sringeri, in the ashram only, where Shankaracharya lives, there only, thousands are fed every day. So we also went there. वो कहाँ से आया? Where you will find in New York this thing happening, or where you will find in California or in Chicago or New Jersey. Because people are struggling to earn. Their whole attention is in getting the money and the work has absorbed them. Nobody has the time. And result is a person has produced scientists, but not carefree saints and philosophers who can go into the depth of the life and bring out some jewels of knowledge and churn the scriptures. देखो यहाँ पे यही लिखा है,
दुदुक्षस यदि क्षिति धेनु, क्षिति लाइक धेनु, लाइक द काउ। आप पहले दीजिए फिर आपको आश्रम वो भी देता है। इवन आश्रम सिस्टम ऑल्सो इज देयर। फर्स्ट यू बिल्ड द आश्रम, आफ्टर सम टाइम आश्रम गिव्स यू एवरीथिंग। यू बिल्ड अन्नपूर्णा, आफ्टर दैट अन्नपूर्णा गिव्स यू। ऐसा नहीं कि अन्नपूर्णा इज ओनली टेकिंग, दैट विल ऑल्सो गिव यू blessings in the form of blessing, in the form of goodwill. तेनाद्य वत्समिव लोकम अमुम पुषाण, बछड़े की तरह उसका पालन करो। तस्मेश्च सम्यक अनिशम परिपोष्यमाणे, सम्यक अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात, पोषमाणे अच्छा, नाना फल ही फलति, कल्पलता एव भूमि, बहुत से फल आएंगे इसमें। आप किसी रिलेशन में ऐसा करो, आप उसको दो, उसके बाद वो आपको देता है। आप ही नहीं दोगे तो वो कहाँ से देगा? यू स्टार्ट गिविंग इन द थिंग गिव्स देयर, है ना? इफ यू डोंट गिव व्हाट इज देयर, यू बोले हमको तो मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा, समय में आएगा मिलेगा। सेम ट्री is nurtured and nourished, after when it gives fruit you are earning from that fruit। कितना अर्न करते हैं लोग फ्रूट से, फ्रूट मार्केट से कितना अर्न करते हैं, ठीक है। सो इतना इसका implications are many of this life between the human being and the outer earth or water etc। इसके साथ थोड़ा, इसीलिए हमारे यहाँ तो olden days the water was not drunk from the tap, it was put in one pot, and from the pot only they were taking, and the morning the pot was worshipped, so some flower was kept, apo ishta mayo bhuva, all these things were said here, so water was divinized, so from that they will take। सुना होगा, देखा होगा, and they will take a lota and they will drink like that, because in the glass the tension becomes more, so they will put a lota round this there, तो वो उससे लेते हैं। वाटर के साथ उन्हें बहुत अच्छा संबंध बना के रखा, अर्थ के साथ रखा, वायु के साथ रखा, तो जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो कम आई। सुनामी कम आई इंडिया, सुनामी आई मैक्सिमम जापान में और श्रीलंका में, where they disturbed everything. India very less tsunami came. Main target was Phuket or all these places in Indonesia, where they kill animals a lot. There it came. The earthquake, biggest earthquake came in Iran side, it all came. Pakistan side, Iran side, Nepal side it came. When you become harsh towards the people around, similarly this will be the harshness that will be there. क्यों? The worst sufferer of COVID was China. Many people passed away in China only. And new diseases always came. SARS also started from China. तो आपको वहां से भी श्राप मिला, जानवर से भी श्राप मिला। क्यों ऐसा काम करो? हर चीज के बीच में एक सॉन्ग ढूंढो, डिस्कवर अ सॉन्ग that it can bless and support you. But Bhagwan Ram was crossing the ocean. All the animals, sea animals, came up so that he can put the feet and walk away. In that crocodiles were also there. इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए एनिमल्स के साथ में. People were working in the fields here. Actually, snakes were there. Therefore, this snake worship was there, Nag Panchami and all these things.
ऐसा ऐसा था. So if you go to Sringeri, so there is a snake temple. There is a temple of Nag Mandir is there. In near Shankaracharya's kutia only. एक मंदिर है वहाँ नाग. I think that area was full of snakes actually once upon a time. And it was not very much built. लेकिन वहाँ भी उन्होंने रिलेशन बनाया उससे. In what with what you have to interact, you make yourself set the thing is a giver for you. आप ऐसा बना के रखो कि उस चीज से आपको मिलता रहे. This is a wise way of living. ऐसा कुछ मत करो कि जो चीज दे सकती थी वो नहीं देती. When Bharatji is going to the forest, earth becomes softer. The clouds follow Bharatji. When even Ramji's time that cloud and the earth didn't become soft as it became in time of Bharatji. क्यों हो गया ऐसा? क्यों हो गया? क्योंकि धर्म में जा रहे थे, उनका भक्ति थी. It is said in Siddhbadi, when it started, lot of storm used to come. So construction was delayed and disturbed a lot. And Gurudev said, let us bring his son. And then Hanumanji's Murti was established. Veer Hanuman pose which is there. After that it stabilized quite a bit. They say like that. First Ram temple was there, then Hanumanji came. Siddhbadi Hanumanji became popular later on. उन्हें उनके साथ एक अपनापन डाला, उनको समर्पित किया. फिर उनकी पूजा होती है, हनुमान जी की वहाँ पूजा होती है, हनुमान चालीसा होती है, आरती होती है. तो ऐसा कुछ रिलेशन लाओ आप, नहीं तो फिर बता देगा, फिर उड़ा देगा सब. ओके. सो नाना फलैहि फलति कल्पलताम इव भूमि. कल्पलता इव गुण संधि is there. कल्पलता इव भूमि. इज इट क्लियर ना? ठीक हो रहा है? तो जरा अपने जीवन में अप्लाई करो. ट्राई टू अप्लाई इन योर लाइफ ऑल्सो. कि कहाँ है, क्या है. चलो, वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्स. इसीलिए you know that Kumbh Mela, this tragedy happened. I felt they did lot of Adi Bhautik preparations. Adi Daivik preparations was also required. Adi Daivik preparations mean there should have been Durga Path constantly going on. Just for the easy and conducive bath of everybody. That was missing. So Adi Daivik was not there. So Devatas have to be propitiated. Some stars were disturbed. Already some astrologers had predicted that 31st around there may be tragedy. वो करना चाहिए था, वो कम हुआ. है ना? चलो भाई, बहुत सी बातें हैं, हमारा टाइम बीत जाता है. सत्यानृता च परुषा प्रियवादनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरावदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा नृपनीति, it's called राजनीति.
राजनीति टॉपिक इज डिफरेंट. राजनीति जनरली वी यूज इन अ रॉन्ग वर्ड. बोले बहुत राजनीति कर रहे हैं, घर में बड़ी राजनीति भाई, पॉलिटिक्स बहुत है घर में, आश्रम बहुत पॉलिटिक्स. तो ये पॉलिटिक्स इज अ नेगेटिव वर्ड ना. लेकिन राजनीति मतलब राजा की जो नीति, आज्ञा नीति इति राजनीति. It's a good word, but because those who did it, they misused it, therefore it had been taken in the wrong meaning. So, like Nripniti anek rupa varangana. Varangana means like a ganika, prostitute, etc. They have various forms. What are those forms? देख रहे हो आप? Varangana, even Nripniti. क्या करेगा राजा? Because wherever power play comes, there very different equations come. Wherever power comes, देखो भगवान राम के घर में ही झगड़ा हो गया पावर की वजह से, भगवान कृष्ण के घर में झगड़ा हो गया पावर की वजह से. हम लोग कैसे रोके उसको? कार्तिक जी नाराज हो गए पावर की वजह से. गणेश जी को फर्स्ट चांस मिल गया, कार्तिक जी हम जा रहे जल्दी छोड़ के. तो ये सब बड़ा अजीब सा है. दिस वर्ल्ड, द वे द वर्ल्ड फंक्शंस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज एनीथिंग मेड आउट ऑफ माया will always have erraticness and some kind of unpredictability, because Maya itself is made out of avidya. What is not there, it will show its various faces. तरह तरह की चीज दिखाएगी, क्योंकि है तो है नहीं. वो जो विद्या से बनी है वो आज है, नहीं है कल, पता नहीं क्या रूप रहेगा. नथिंग विल बी सर्टेन इन इट. सो वारांगना इव नृपनीति अनेक रूपा. दिख गया ना क्या है वो? सत्या. कभी तो एकदम सच सच हो रहा है, एवरीबडी इज स्पीकिंग वेरी ट्रूथ, वेरी राइट. सेकेंड, अनृता, समवेयर false is spoken. Up to save the person, to save the country, to save his position, or to destroy the opposition, there are many reasons for which the false has to be said sometime. Sometimes wrong reason are there, sometimes right reason is there. वो तो सबके बस की बात नहीं है, इसलिए ना. Not everybody can be here in the political area, because you cannot see this is right here, this can be wrong here. This can be right, this can be wrong. The equations are not very straight. इतना सीधा साधा नहीं है यहाँ मामला. ऐसा लगता है कि सीधा साधा, लेकिन ऐसा है नहीं वहां पे. सत्या अनृताच. Son becomes enemy. अब if you see Mughal empire, all sons were enemies of their father. सभी अटैक किए एक दूसरे के, भाई भाई को मार डाला वहां पे, फुल ऑफ ब्लड. सब मारे एक दूसरे को. That they were quite ruthless and they were quite power hungry people. There was no principle. किसी किंग को ले लो, सब एक छीन छान के बने हैं. वो very dirty kind of politics was there. But for some higher reason also someone may have to speak the false thing or the true things, what is required at that time, what is good for the country. That should be there. If you see this, what is his name? One who was defeated by Khilji, Padmanabh. उसका नाम क्या था? राणा नहीं, क्या नाम है उसका? He went for a fight with Khilji. Khilji got him killed by another way.
He should not have entertained him. Rawal Ratan Singh. He should not have entertained. Atiti Deva Bhava should not be there at that time. He was cheated. Prithviraj was cheated because they did not know. वो प्रिंसिपल नहीं समझ पाया कि प्रिंसिपल का उपयोग कहाँ है. And here is where Chanakya excelled. Chanakya knew how to deal with the Nandas. Chanakya has become synonymous now. बोले चाणक्य ही है. सत्य अनृत हो गया. Parusha, very hard speech is there. Somewhere it is very hard. बहुत hard हो गया. और प्रियवादिनी च, somewhere it is very sweet talks are there. अब in 84 in Amritsar, in the Golden Temple, I don't know, you were born at that time? Not born. I have a vivid memory. Tank was sent inside the Golden Temple. And all terrorists were inside hiding. And when I go to Amritsar, they tell what conditions were there. They were kidnapping anybody for money. Women were being kidnapped. And all going in the temple. And there's Bhindawala was there. He said, if anything happens, well, I'll run or I will shoot. Situation was out of control. The army came inside and they blasted, the whole temple was destroyed. Because of which Indra ji got killed. सुना है? खूब मारा उन्होंने, वहां से मारा, एकदम हार्ड हो गया. वही बहुत सॉफ्ट थी पहले उन्हीं के साथ. इट वॉज हर क्रिएशन ओनली. पंजाब प्रॉब्लम वॉज हर क्रिएशन. भिंडरावाला वॉज हर क्रिएशन. उन्हें भी भारी पड़ गया, भाई जान ले लिया. क्या क्या होता है उसमें. So you have to Parusha. पूरा सब खत्म कर दिया. When ultimately they had only bodies of this terrorists. Sub arms, ammunition, bomb, everything was inside that temple. Horrible condition. And whole city had blackout. So sometimes you have to be like that. Sometimes you have to be Priyavadini. Not Priyambada. Priyavadini. Sometimes we are very sweet. Hill मिलेंगे फिर. You know, if Pakistan and India, ambassador means so nicely, they shake hand, they smile, they have a nice dinner together. इतना मार पीट करते हैं बाहर में, बाद में मुस्कुरा के बात करते हैं. क्या था, वाजपेयी जी का था, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी. किसने बोला था कि आप हमसे शादी करिए, क्या था, some journalist was there. हाँ, बोले आप हमसे शादी कर सकते हैं पाकिस्तान में कोई, बोले हमें कश्मीर दहेज में दो, ऐसा कुछ था. चलता तो बस चली बीच में, कुछ नहीं हुआ उससे, सब बेकार चीज. प्रियवादिनी च, हिंसा, समटाइम लॉट ऑफ वायलेंस इज देयर, समटाइम दयालु, समटाइम वेरी कंपैशनेट ग्राउंड पे गया. अब देखो, दिस हमास एंड इजराइल, दे वर फाइटिंग, सबको मार वोड़ दिया. अब जो है, अब उनमें सुलह हो गई, दयालु हो गए. अब वो उनके होस्टेज दे रहे हैं.
सबको मार दिया, उसके बाद होस्टेज, अब होस्टेज वापस कर रहे हैं। इजराइल है, उसने अपना काम तो कर ही लिया, खत्म कर दिया उसको, सीरिया में बैठ गया जाके। हिंस्रा दयालु रपि च अर्थपरा वदान्या। अर्थपरा, सी, अर्थपरा मीन्स समवेयर इट इज आफ्टर मनी, समवेयर इट इज आफ्टर मनी। भाई हमको पैसा दो, वी हैव टू फाइट इलेक्शन, और समवेयर वी नीड मनी फॉर वदान्या, somewhere it distributes money, somewhere they will give, okay, no power cut will be there, election is coming or something। कुछ कह नहीं सकते किस तरह का सिचुएशन बन जाए, सिस्टम में क्या हो जाए। नित्य व्यया, सी नेक्स्ट वर्ड, नित्य व्यया, समवेयर इट इज वेरी, अब मिस खूब खर्चीली हो गई। अब आई वेंट देयर इन वेयर near of in Faizabad, all this farmers loans are waived off. When Delhi election is a competition between हम किसको कितना दे सकते हैं, सबके लोन्स, सबका लोन्स, अब जो लोन लेता है वो वापस भी नहीं करता, तो बोले तो माफ करी, हो ही जाएगा वो। ये सब कैसे, सब इनका जो पैसा है, जो टैक्स पेयर का मनी है, सब खत्म हो रहा है इससे। वेरी बैड ट्रेंड इज देयर। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया में कोई एक डिक्टेटर टाइप नहीं, सबको मार के ठीक करे। सो नित्य व्यय, सब खर्चा करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हर लड़की को 2100 देंगे, बीजेपी का 2500 देंगे, काम करे चाहे न करे। पंजाब में भी यही प्रॉमिस किया, अभी तक दिया नहीं है। कहां से देंगे? इससे पहले भी होता होगा, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, कोई काम क्यों नहीं करेगा। आई वाज इन उड़ीसा, हमने कहा कि व्हाई इट इज लेड बैक, बोले दे गेट एवरीथिंग फ्री, खाना फ्री मिल जाता है। उन्होंने दे कॉपी तमिलनाडु मॉडल, अम्मास टिफिन, 10 रुपए में खाना मिल गया पूरा, 10 रुपए में चावल मिल गया। तो काम क्यों करेगा, उसको फ्री मिल रहा है। और ये कल्चर ही खराब है, दिस इज अ बैड कल्चर। नित्य व्यय, प्रचुर नित्य धनागमा च, पता नहीं कब ठीक होगा ये। समटाइम इट पेव्स अ वे फॉर अर्निंग, दिस विल नेवर हैपन इन अमेरिका, this will never happen there. So this is like the Nipuniti. And if the political party are not there, people are so foolish, they will not give the vote. Delhi में free bus for women. If the women can afford, why to give free bus? Why? मतलब हम लोग को मुफ्त मिलने में शर्म आती, किसी का पैसा ही है वो, आप ऋणी हैं कहीं पे, यू आर ऋणी, यू आर मेकिंग अ लेम सोसाइटी। फ्री में आप दे दे के आप उनको निठल्ला बना रहे हैं, यू आर मेकिंग देम लेम, यू आर मेकिंग देम तामसिक, एंड द मनी हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द ट्रेजरी। क्यों चीज फ्री, बट ऐसा है नृपनीति, इस समय का यही टाइम है। चलो भाई नेक्स्ट वर्स। ये तो अलग अलग तरह की राजनीति होगी, समटाइम बहुत काम होगा। There's a time in it was war with India and Pakistan. Lal Bahadur Shastri was there. He said everybody will leave one time food और द राशन, जो पैसा आएगा उस, बहुत लोगों ने खाना छोड़ा, शायद हफ्ते में 1 दिन था या दिन में 1 दिन कुछ जैसा था, दे लेफ्ट द फूड। कितनी अच्छी बात थी। सुभाष बोस सेड, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। एट दैट टाइम पीपल स्टार्टेड कमिंग ऑन द रोड, पॉलिटिक्स वॉज डिफरेंट, गिविंग लाइफ। People left their universities and colleges. People left their families.
to fight the British. That kind of politics were there. Newspaper were brought out. All the freedom fighters, most of them were lawyers, because they knew how to fight the case for this people who are being shot or who are under in jail. ऐसा ऐसा भी कई चीज हुई, तरह तरह का काम हुआ. पता नहीं क्या रिक्वायरमेंट आ जाए, और रिक्वायरमेंट में कम. So this is various kind. It can be good, it can be bad, it can be worst, it can be very good. For selfish reasons, it can be very bad. For selfless reason, it can be very good. Because a king has power. King or the ministry or the prime minister, agriculture, finance, military, police, social development, education, home, foreign affairs, everything is theirs. कुछ भी करवा सकते हैं. उनका सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, मारो जा उनको जाके. The army will follow the government, the prime minister. रविंद्र गांधी सेट बांग्लादेश में जाओ, तो चले जगह बांग्लादेश में मार के आ गए उन लोग. बांग्लादेश तो खत्म कर दिया था. So some good examples are also there, bad are also there. So they have done quite a good job in some areas. अब देखो ट्रंप ने क्या कहा, some immigrants को बाहर करो. 16,000 Indian have been deported. 16,000. And they are searching now. An Indian also said, so हम लेंगे, ठीक है, जिसके पास please deport them. At their expense they are deporting. Why can't they do in India? So many crores of Bangladeshis are there because the political system is weak. They are trying now. They have started in Delhi में, बॉम्बे में स्टार्ट किया. हटा रहे ना सब. इनकी मेड भाग गई, बांग्लादेशी मेड रखा था. हाँ, बांग्लादेशी मेड का खाना खाते थे. मुस्लिम बांग्लादेशी मेड, ब्राह्मण लोग. हाँ. अच्छा है ना. तो 4 साल हो गए ऐसा. शायद वो क्लियर कर रहे हैं. दिल्ली में भी ये शुरू किया है, रिपोर्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, शायद जेल में डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. हाँ हाँ, वो कह रहे हैं हम yesterday he gave, हम चुन चुन के हटाएंगे. अमित शाह है सर, चुन चुन के हटाएंगे. अमित शाह टफ पर्सन, वो बोलते हैं करते हैं वो लोग. एनीवे, वरांगना ये तो राजनीति है भाई, अलग अलग तरह से चलती है. देखो राम मंदिर बन गया, अगर कोई बहुत पॉलिटिकली स्ट्रांग होता पहले ही बना देता ये. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज द वे द राजनीति वर्क्स. सो wherever power comes, these things are there sometimes, but we should hold on to the powerful and not to the power. ये तो दुनिया जगत दृष्टि से सब बता रहे हैं. सेम फ्रॉम ईश्वर दृष्टि, धर्म विल विन. परमात्मा दृष्टि बोले इसमें क्या सोचना, जो होगा भगवान देखेंगे. वही सोच राम रचि राखा, हम क्या करें इसमें. अब श्री तुलसीदास जी रामायण, he has not mentioned too much of all these things. It was Akbar's age. कुछ he was डूबे हुए अपने ईश्वर में डूबे, बोले भगवान देख ले. आत्मदृष्टि इज देयर, तब तो कहना ही क्या. Somebody went to Raman Maharishi, बोले why don't you join freedom fighting? वैसे देख रहे थे उसको. बोले you join. अब उनका आंसर, don't get upset what he said. He said if in the screen something is on fire, will you go with a bucket to extinguish it when you know it is false? उनका ये आंसर है. आत्मदृष्टि से देख रहे हैं.
अब वो समझ नहीं पाएंगे, दे वोंट अंडरस्टैंड। उनको नहीं दिखता है, कोई समस्या नहीं दिखती, उनको मिथ्या दिखता है जगत। नेक्स्ट श्लोक 48। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानाम दानं भोगे मित्र संरक्षणं च येषामेते षड्गुणान् प्रवृत्ताः को अर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। Some kings are there which have 6 qualities and some don't have 6 qualities. If 6 qualities are there, then only they can give a support to the people. Number 1, Agnya. So they have a capacity to make the things do as they want. किसी को बोला वो काम हो जाएगा, because the king has said. Center has to be very powerful. पता लगा गवर्नमेंट ही गिर जाएगी काम करो तो, वह नहीं है। वाजपेयी जी है 23 पार्टीज कोलिशन, इतना बड़ा 23 कोलिशन पार्टीज। कभी वो बिगड़ जाएंगे, वो बिगड़, सबको मनाना पड़ता है। मेजॉरिटी नहीं है, यही हाल होगा। कुनबे से बनी है, आज्ञा करो उसको, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्वीपिंग मेजॉरिटी से, तब you can do something. Kirti, the king should have kirti. Kirti means fame. They should be popular for doing something. Kirti comes only after you do something good. Kirti will not come unless you have done something excellent. कीर्ति ऐसे फ्री में नहीं मिल जाती। ये अच्छा काम करता है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे पार्टी में हो। कीर्ति मीन्स एक जो देश में विस्तार है, दैट इज कॉल्ड यश। जो काल में विस्तार है, दैट इज कॉल्ड कीर्ति। देयरफॉर मदर ऑफ कृष्ण इज भगवान यशोदा, मदर ऑफ राधा जी इज कीर्तिदा। One is Yashoda, other is Kirtida. कीर्तिदा हो गया। कीर्ति तो उसी को मिलेगी जो त्यागी होगा, who has identified with the bigger cause, who has given his life for some purpose, who has offered his something he has given. कुछ तो दिया है उसने। He may have given his time, he may have given something good. He has enriched the place, he has enriched the community because of his austerity. तब कीर्ति मिलती है। अगर भगत सिंह को कीर्ति मिली because he gave his life, कीर्ति मिली, that is unblemished कीर्ति. Nobody talks bad about Bhagat. People will talk bad about Gandhi and Nehru, but never about Bhagat Singh. इनकी ब्लेमिश्ड कीर्ति, ब्लेमिश हो गया इनकी कीर्ति को। लोग काफी गालियां देते हैं आजकल। लेकिन सुभाष बोस को कोई नहीं बोलेगा, वो कीर्ति अनब्लेमिश्ड है उनकी। पटेल को नहीं मिलेगा, शंकराचार्य को कोई नहीं बोलेगा। उन्होंने दिया समाज, गुरुदेव की कीर्ति उन्होंने समाज को दिया। 40 साल वो दौड़ दौड़ के गीता प्रचार किया, सुख दुख सहा, अपमान सहा, मान सहा। So kirti comes only when you are tyagi and tapasvi. Otherwise, you are egoless. If you cannot continue. If Sachin has kirti because he gave good name to the country, तब उनको कीर्ति मिली। ठीक है ना? So किंग को भी कीर्ति मिलेगी when his rule is good.
राजा धार्मिको विजयी भवतु, सत्यराम तपस्वी राजा. Then he got Kirti. He did a great work. Great work was done in his regime. रोड्स अच्छी हो गई, ये बोल सकते हैं लोग. लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया. Like in Singapore, Lee Kuan Yew got a Kirti because he lifted Singapore from nowhere to first class country. Single person. They say after he will pass away, we don't know what will happen, but still they maintained to certain extent. एक ही संकल्प था, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, करप्शन ना हो, क्लीन हो सिटी, ऐसे से बहुत से ब्यूटीफुल हो, लाइट है, फाउंटेन है, प्लांट्स हैं. कीर्ति बन गई उनकी. That country is smaller than Chennai or somewhere closer to that. इतनी छोटी कंट्री है. Population is 6 million. 6-7 million is the population, I think. Imagine that. Here Delhi's population is more than 2 crores. More than 20 million. Anyway, लेकिन कीर्ति ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगी किसी को. कीर्ति देवता है. इट नोज वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो. सबको यश नहीं मिलता है. यानी कि हमने काम ज्यादा किया, यश नहीं किया. उसमें भाव है. वी आर डूइंग समथिंग विद ग्रेट एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड. यू हैव रिनाउंस समथिंग. रामायण को कीर्ति मिली बहुत. बल तुलसी रामायण गॉट कीर्ति. Not all Ramayana, many Ramayana are in Hindi, but all did not get Kirti. Many devotees are there, but none of them will get Kirti like Tulsidas. Tirupati will get Kirti. So, Agya Kirti. When you do something for a long time and surrender with sacrifice, then God will know that इसको थोड़ा यश दिया जाएगा, इसको यशस्वी बनाया जाए. है कि नहीं? सबको नहीं मिलती है ऐसे. पालनम ब्राह्मणा नाम, थर्ड क्वालिटी. देखो क्या है, यही है. दिस इज व्हाट आई से. द क्षत्रिय इज टू प्रोटेक्ट द ब्राह्मण, दैट कम्युनिटी हु इज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्चर्स. शास्त्र रक्षण, धर्म पालन, पूजा पाठ, धर्म पालन, अध्ययन अध्यापन, यज्ञ याग. Those who are connecting to subtle level, either at the level of devatas, either at the level of scripture, or at the level of karma kand, or at the level of mantras. Various classes are there. So they cannot have shastra. So they are being protected by the shastra. Shastra is protected by Shastra. बोले आपको हम देखेंगे, आप इसके बारे में चिंता मत करिए. They patronizing that, what is it called? They are patronizing them. जितना भी भोजन आएगा, बोले the king will send all the, and they will do many things. I'll give you the land for ashram. आश्रम हम बनवाएंगे. I will facilitate everything. I will give whatever money is required for running of the particular institution. It becomes easier. Palanam Brahmananam. And Brahman will give the best thought. The Kshatriya will give security. Brahman will give knowledge and devotion. Dharma, Gyan or Ishwar, Vishwas. This is a contribution of the Brahman to the community. Kshatriya will give Rakshan. Vaishya will give production, money, to hold everything. Vaishya is like the feet, who is the thighs, who is holding the body, which is holding, because money is required for
ashram also. You need money for bringing the people also. But palanam brahmana naam. पालनम ब्राह्मणा नाम. समझ में आ रहे हैं ना? तो कैसे कैसे प्रिंसिपल्स हैं. दिस इज थर्ड पॉइंट. थर्ड है ना. इफ द गवर्नमेंट विल नॉट बी, कुंभ मेला इज गोइंग ऑन, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द किंग देयर. If the sarkar or the government had not made all the arrangement, ordinary people cannot do anything. It will be chaos. 700 crores have been spent. 700 crores. But revenue will be much more. Those who are saying that this much is spent, it is much more that they are going to get it. 6,000 crore जो कुछ भी हो, बोल देते हैं कि आपने इतना खर्चा किया. Anyway, but वो protection किया. Yesterday also I told that all big temples like Rameshwaram temple, Madurai temple, all were made by kings. उनका इतना दाम था. This is second point. Third point. Fourth, दानम. They do donate. Dhanam. They will give charity also. That king will give charity. इनके पास तो बहुत पैसे होते हैं. ये थोड़ी ना कि they have land of 7,000 crore. These kings in Jaipur and Jodhpur जैसे. दान दो उसका दान दो आप, नहीं तो आपकी परेशानी आएगी. और ये कोई बेटा होता ही नहीं इन लोग के. मजेदार बात ही होती है. भगवान भी मजा करते हैं. मैक्सिमम किंग विल नॉट हैव सन. दान नहीं करते लोग. अगर दान करते हैं तो सर्पदोष होगा, शाप वाप मिला होगा किसी से. सो दानम, दिस इज द फोर्थ पॉइंट. भोगे मतलब ऐश्वर्य का भोग कर रहे. दे आर एंजॉयिंग देयर लॉर्डशिप, लॉर्डलीनेस. एंड दिस इज 5. 1 2 3 4 5. मित्र संरक्षणम च. Protecting the friends, those who are friends are there. Friends, ये किंग का लक्षण होना चाहिए. Friend, it can be friend means friendly country also. You know, Russia had come when Bangladesh they were taking. So America was coming. So before America, Russian ship had come. बचा लिया, वरना चला जाता बांग्लादेश पाकिस्तान के पास. So they say Russia was a very good friend, always of India. अमेरिका डाइसी है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन रशिया स्टूड लाइक दैट. एनीवे, मित्र संरक्षणम च. मित्र का संरक्षण करना वो होता है. हाँ, ये शामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता. If these things are not in the king, 6 तेषाम पार्थिव उपाश्रयेण. बोलो वो who will take support? कौन उनका सपोर्ट लोग? नेपाल किसको सपोर्ट दे पाएगा? मालदीव किसको सपोर्ट दे पाएगा? इनके पास है ही नहीं कुछ. इंडिया ने जाना बंद कर दिया, मालदीव डूब गया. ऐसे सही क्या क्या देखो सब लिखा है. ठीक है. सो दीज आर 6 क्वालिटीज व्हाट अ किंग शुड हैव. एंड इन पर्सन आल्सो दिस इज ट्रू फॉर पर्सन, दैट somebody can support you or he is worth living with. If somebody is there who follows him, he has a kirti, he has protected the saints, living at least, he has given dan, he does yathachit bhog, and he has already taken charge of the people who are with him. Well, he doesn't take care of his own people, then who will be with him? सब छोड़ देंगे उसको. भगवान राम को देखो आप, इसमें सारी चीजें. एवरीबडी ओबेड हिम. कीर्ति तो पूछो मत राम जी की.
Palanam Brahmana Nam. In Bhagavad it comes, Ramji called all the Brahmin. He said, see, unnecessarily I am sitting as a king. I am giving everything. So Sita ji took one sari and sindoor. He said, I am donating everything to everyone. Because you are more Tyagi and Tyagi should be the holder of the wealth, etc. I am not fit. I am at your feet, I am the servant now. ब्राह्मणों का है, हम लोग कोई पढ़ने पढ़ाने वाला काम करते हैं. ये सब राजा वाजा वाला काम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफिकल्ट एरिया. हम लोग से कहाँ से होगा, आप तो कैसे छोड़ छाड़ के जा रहे हो. देन दे सेट, ओके राम, डू वन थिंग, यू प्लीज रूल ऑन माई बिहाफ. दे लर्न फ्रॉम राम जी ओनली. भरत जी जैसे ट्रस्टी हो गए थे तो राम जी भी ट्रस्टी बना दिया. उन्होंने सब दे दिया, दान दिया, यथाचित भोग किया और सब मित्रों का संरक्षण किया. ऐसा बोलते हैं कि दिस व्हाट इज दैट, क्या नाम उसका, साउथ में टेम्पल रंगनाथ, श्रीरंगम. श्रीरंगम. So Vibhishan ji came to have darshan of Srirangam. So one Brahmin was killed by the chariot. Chariot ran over him. तो सब पकड़ ले विभीषण जी को. So विभीषण जी से, you will be now killed. बांध लिए, बोले you will be killed. And this news went to Bhagwan Ram. Bhagwan Ram came. He said, what is servant's fault is master's fault. Therefore I am saying that please kill me and don't kill him. इसको बोलते हैं मित्र संरक्षणम च. This comes in one Mangala Ramayana. They said, how can we kill you? He said, but don't kill him. I accepted him, so I have accepted him. तो बोले सब छोड़ देते हैं इनको. तो उनको छोड़ दिया गया. क्या क्या बातें हैं. वैल्यू होती कि ये अपने लोगों को छोड़ते नहीं. ये थोड़ी ना है ऐसा कोई नहीं सगा जिसको उसने नहीं ठगा. समझ गया किसकी बात कर रहे हैं. हम लोग को बचा के रखते हैं. कानपुर में और मजेदार है. एक बार जानते हो ठग्गू के लड्डू. इसका फेमस लड्डू है ठग्गू के लड्डू. नेक्स्ट प्लीज. बहुत बाकी है, टाइम पूरा हो रहा है यहाँ. वी आर जस्ट टचिंग 50 and 50, 60, 70 मोर आर देयर. कब होगा भैया ये. यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकं महत्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम्. मेरौ ततो नाधिकम् तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम् वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयोनिधि कूपे पश्य पयोनिधावपि घटः गृह्णाति तुल्यं जलम्. कूपे पश्य पयोनिधौ अपि. Supposing pot is there, you put in the coop means the well, it will fetch same amount of water. Or you put in the ocean, it will tulyam jalam, same amount of water. Similarly, whatever is in your fate, yad dhatra nij bhala pattam likhitam. जितना लिखा हुआ है सामने ऐसे लिखा है. स्तोकम लिटिल महद्वाधनम ज्यादा लिखा है. तत्प्राप्नोति कहीं भी मिल जाएगा. मरुस्थले whether you in the desert also you will get, and if you go in the golden Meru then also you will not get more.
तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम। ये धीर बनो जरा सा। कृपणाम वृत्तिम वृथा। कृपणाम वृत्ति मीन्स डोंट हैव एटीट्यूड ऑफ हमें और मिल जाए और मिल जाइए। जितना मिलना है मिलेगा, अपना मस्त रहो। कहाँ? Therefore I say, when sorrow comes, they say we tried our best to remove the sorrow, but this disease has not gone, this problem has not gone. And then you say it is my problem. सुख के भी साथ ऐसे, if दुख you cannot remove, even if it is you are saying प्रारब्ध, then sukh also you cannot remove. It will come in some way or the other. इसलिए don't fight with what is not possible. भगवान ने लिखा है किसके पास इतना पैसा रहेगा, जितना पैसा इनके पास आ ही जाएगा. One day, Parvati told to Shivji, see, our family is increasing and we don't have proper house. क्या करें? फिर बोले there is no house, there is no room, there is no roof. बुलाया गया, बहुत बढ़िया घर बनाया गया, बिग हाउस वॉज मेड. बोले गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया गया. रावण वॉज अ वेरी बिग पुजारी. सब पूजा वूजा हो गई, पाठ हो गया. शिव जी और सब बैठे थे यजमान की तरह. इन्होंने दोनों जने बैठ के सब बोले हमारा घर है, सब है. उस समय तो देते थे दक्षिणा. बोले दक्षिणा आप मांग लीजिए जो आपको चाहिए. बोले यही घर दे दो. शिव जी सौ पार्वती जी. क्या होगा? फिर वापस आके वहीं पे जा. आपके पास व्हाट हैज टू कम विल कम. डोंट वरी. लड़के लड़के के लिए पागल होते हैं. आई से देम, सी यू गॉट योर फादर मदर विदाउट एफर्ट. You got servant without effort. You got a school teacher without effort. So that husband or wife, why you are putting effort? Somehow those who have to come, आ ही जाएंगे आगे पीछे. Why to break your head and secretly talk and secretly meet and create problems? होना होगा तो हो जाएगा. नहीं होना तो क्यों make yourself emotional punch back, punching back? क्यों अपने को ऐसा बनाओ? नहीं होगी तो नहीं होगी, होगी तो होगी. सो तद्धीरो भव. तेरा धैर्य रखो. मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्त. यल्लभसे निज कर्मोपात. Whatever you get as per your प्रारब्ध, entertain yourself. नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है. इतना ही है. Money doesn't mean only money. It can be family, it can be disease, it can be health, it can be house, it can be profession, it can be children. है कि नहीं? जो जितना है होता है, जैसा वैसा है. आप जितने से उससे भगवान की पूजा करो. वर्शिप द गॉड इन सम वे और द अदर. फ्रॉम दैट अमाउंट ओनली वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव. अर्चना करो. पूजा सामग्री, your puja samagri is decided by God. He will give you puja samagri. Whom He wants that you should please me through this person, that God will decide. तो अपने दिमाग क्यों लगाते हो? दिमाग ये लगो कि कैसे प्रसन्न करें. यहाँ दिमाग मत लगाओ कि ये क्यों मिला और क्यों नहीं मिला. इसमें दिमाग मत लगाओ. Because that answer he won't get. हमारे ऐसे कौन से कर्म थे, भगवान से पूछना. ये मिला हमको, वो नहीं मिला, उसके साथ वो मिला. जैसा है वैसा है. अब जो है सो है, उसको नहीं बदल सकते. पुण्य करो,
आगे अच्छा फल आएगा। जिमी सरता सागर पही जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिनो बिनाए, धर्म सीलन पर जाही। So bhai, like the rivers go towards the ocean, the punya will go towards the punyavan person. Anywhere he will go, somebody will be there to love him, to serve him, to give him money, to give him whatever he needs, if he has punyashali person is there. जो को बदल नहीं सकता उसमें दिमाग मत लगाओ। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। ये लाइन हमको इतनी अच्छी लगती है। बोले सनराइज क्यों होगा? तो होगा ही, तुम्हें रो चाहे पटको चाहे सुसाइड कर लो, सनराइज तो होगा ही। तस्मात् अब सनसेट भी होगा, रोक तो सकते नहीं कि आज आप पृथ्वी को रोक लेंगे, धक्का लगा देंगे सो रुक जाएगी। होगा तो है नहीं। जो चीज है उसको एक्सेप्ट कर लो एंड डू वर्शिप ऑफ द गॉड। देयर इज नो टाइम एंड नो सिचुएशन वेयर गॉड कैन नॉट बी वर्शिप्ड, वेयर यू कैन नॉट प्लीज गॉड, वेयर यू कैन नॉट गेट मोर क्वालिफिकेशन, वेयर यू कैन नॉट प्रैक्टिस रिनंसिएशन, वेयर यू कैन नॉट गिव अप योर ईगो, वेयर यू कैन नॉट गिव अप अटैचमेंट, वेयर यू कैन नॉट सर्व। देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ गिविंग, ऑफ फॉरगिविंग, of detaching, of becoming humbler. There is something to learn from some people around, something to serve them. चलो कल देखते हैं। स्वद्रक्ष्याम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।